हाय एवरीवन आसिली आसिली कौन केमती अच्छा समस्ते आशा कर समस्त बहुत बढ़िया से थे एवं प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया वे चली थी हाँ कि नहीं। राधे राधे। चलो प्रणाम गुड इवनिंग स्टार्ट करिया क्लास कहीं बेकार समय सारिया स्टार्ट करना स्टार्ट करी करी गपिया ना कौन कौच। शुभ संध्या आरती चलो स्टार्ट करिवा। हेलो 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 चलो फर्स्ट क्वेश्चन आसीगलानी जल्दी जल्दी आंसर दियो कंफ्यूज्ड बंदे। वेरी गुड इवनिंग। ओके चलो first question, a teacher administered a pre-test at the beginning of a unit and a post-test at the end to measure student growth. This primarily an example of जने टीचर कौन कले ना गोटे यूनिट स्टार्ट हवा पूर्वर गोटे एग्जाम करेले ओके पुणी कौन कले ना मोर सरिला बेलू को गोटे प्री टेस्ट है अच्छा चलो हाँ मैम बहुत दुख सिलेबस सरबनी कि एग्जाम हेबनी कौ सिलेबस सरबनी कौ सिलेबस सरबनी कि पिला माने सी फॉर चॉकलेट गोटे दियंतु अरे पिला माने तो माने केबे देखाबो मो सहित देखाले चॉकलेट आरंभ करी बिरयानी सब देबी देखाबो बस खाली मो सहित आगे। चल आंसर को एबे आगे कोन हबो कहिला ए जगह टीचर एडमिनिस्टर प्री टेस्ट एट द बिगिनिंग गोटे टीचर एडमिनिस्टर कला कोन प्री टेस्ट ओके प्री टेस्ट स्टार्ट रे एट द बिगिनिंग ऑफ ए यूनिट गोटे यूनिट को स्टार्ट करबा पूर्व से गोटे कोन कला टेस्ट कला देन पोस्ट टेस्ट एट द एंड पिला माने जगह एट द एंड कथा कहला टू मेजर स्टूडेंट ग्रोथ गोटे पिलार ग्रोथ को मापिया पे से एट द एंड रे गोटे एग्जाम कला ताले मु जगह कोन कहि मोर फॉर्मेटिव होउची ना समेटिव होउची ना डायग्नोस्टिक होउची जदि मु कहि थांती फास्ट से कर देला करी के रही गला ता माने पिला मानकर से जगह से कोन कला त प्रायर नॉलेज को चेक करिया को मे बी से तार डायग्नोस्टिक असेसमेंट कला से जगह रे मु कहि परथांती कि हां डायग्नोस्टिक असेसमेंट हबो बोली ओके देन कोन कहिला देन कौन कहला जदि मु कहि दांती कि हां एटा ऑनगोइंग क्लास होउची ताले मु कहि दांती फॉर्मेटिव तो ऑनगोइंग कथा नाही ताले फॉर्मेटिव हबो नाही ओके हबो नाही देन समेटिव असेसमेंट यूज फॉर ग्रेडिंग प्रपोज देखो ए जगह जदि हमर फास्ट से एग्जाम करी रही जाई था ताहाले मु कहि दांती हां से डायग्नोस करी रही गला किंतु से माने गोटे टेस्ट कर देला फर्स्ट बिगिनिंग रे प्री टेस्ट गोटे नहीं गला देन पोस्ट टेस्ट होउची कोथि पई होउची पिला मानकर ग्रोथ को मेजर करिया को माने तांकर ग्रोथ मेजर करिवो तांको सर्टिफिकेट दबो किछि गोटे जगह रे कार्यक्रम चलिवो ताहाले मु कोन कहबी ए जगह रे मोर एट द एंड वाला कथा अछि माने मु समेटिव कहबी ना नहीं मोर लास्ट जिंसटी कोठी शेष होई गला एट द एंड रे ताले मु कोन कहबी ए जगह रे मोर समेटिव होउची ना होउनी फॉर ग्रेडिंग पर्पज तम मानकर जेते बेले 10th बोर्ड दौज फर्स्ट तुम प्री टेस्ट होउची कोन पे तम मानकर नॉलेज चेक करिया को पुन तापर तम मानकर होउची ना नहीं मेन टेस्ट होउची ना नहीं बोर्ड एग्जाम होउची जो बोर्ड एग्जाम टा को पचार जे जगह ताको हमें कोन कहबा समेटिव कहबा फॉर्मेटिव कहबा ना डायग्नोस्टिक कहबा ओके चलो देखा एबे जेबे आपनकर मोर भगवान चलो बुझिएला कि नहीं आगु को बढ़िया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट वैलिडिटी रेफर टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट वैलिडिटी कौन कहला बुझिएलानी मैम ओके चलाओ थरे देखो ए जगह फास्ट कहला समेटिव अच्छा ठीक अछि जो माने बुझी न पारला टिके एंड ऑफ माने सम हां जो माने बुझी न पारले से माने हमें आउथ टिके बुझी नबा कहला कि टीचर एडमिनिस्टर ए प्री टेस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ ए यूनिट जदी गुटे टीचर फास्ट टेस्ट करी रही जाई थांता से आगु को बढ़ी न थांता धर तमनकर प्री टेस्ट हे गला प्री टेस्ट से जगह हम स्टॉप मार देले हमें आगु को बढ़ेलेनी टेस्ट को ताहाले मु कहि देन से जगह मोर कोन होउची मोर डायग्नोस्टिक असेसमेंट हला काहे गोटे पिलर प्रायर नॉलेज चेक करिया को मु कली तमनकर जो आसी गला हमर बोर्ड एग्जाम कथा से जगह रे मु कोन कहली कि तमनकर फर्स्ट हला प्री टेस्ट हला देन तमनकर मेन एग्जाम ठीक अच्छी तो से हिसाब से हमें एग्जांपल टा एठी पकई दबा फर्स्ट वो टीचर कोन कर तुम प्री टेस्ट हला काहे कि तुम प्रायर नॉलेज चेक करिया को लास्ट किंतु कोन हला एट द एंड वाला जिंस माने बोर्ड एग्जाम आसिला माने मु कोन कहिबी मोर एट द एंड वाला कथा आसिला माने कहिबी समेटिव असेसमेंट होउची ओम प्रकाश बुझी पारला ना कोठी डाउट रहिला
हाँ फास्ट पार्ट होउची हमर समेटिव डायग्नोस्टिक सेकंड पार्ट होउची हमर समेटिव जदि हमर फर्स्ट पार्ट रे जिंस रही जाई थान ताले हम कहि थान ए जगह मोर डायग्नोस्टिक असेसमेंट होउची बोली कि जेतु से कंटिन्यू गला हमर लास्ट एंड हैला एंड ए पोस्ट टेस्ट एट द एंड ऑफ ए जो मेजर टू स्टूडेंट ग्रोथ त से जगह रे मु कहिली मोर कोन समेटिव असेसमेंट हबो चलो आगु को बढ़िबा in the context of assessment validity refer to validity देइची माने आगे मो कोड देख देबी कोन थिबो intent to measure ought to measure वाला जिंस थिबो ओके चलो वेरी गुड कंसिस्टेंसी कहिले बाबा माने मोर कंसिस्टेंसी कहिला माने मो कोन कहिबी कंसिस्टेंसी आसिला माने मो कहिबे जगर मो रिलेबल कथा कहूची ओके असेसमेंट मेजर इंटेंट टू मेजर देखिला ऑप्शन बी टा देइची ना नहीं इंटेंट टू मेजर आगु को बढ़िबा which of the following assessment method is most susceptible to the halo effect halo effect कहिला माने एटा हो हमर कोन cognitive bias halo effect हो हमर कोन ओटे cognitive bias ओके पिला माने मोटे एग्जांपल देबी cognitive bias रो claim to measure yes very good ओके गोटे कोन हमर cognitive bias रो गोटे एग्जांपल देबी cognitive bias को आमे एमते मन रखि परिया ब्यूटी bias कहि की ओके फॉर एग्जांपल जदि हमें कहिबा बा माने ठीक अछि एथर मामा माने कहिबे ओके चलो बोथ ब्यूटी बायस हालो इफेक्ट को कॉग्निटिव बायस बताओ कमे ब्यूटी बायस बोली भी मने रखि पारिबा ब्यूटी बायस बोली केमिति मन रखे तमानु होउची ए जगह रे हमें टोटली कोन तो मैम टोटल सॉरी मु से माने एटा कमेंट देखो देखो मु कहूची टोटली ओके चलो छाड़ो आगु बढ़िया कौन आसला ना हाँ कॉग्निटिव ब्यूटी बायस कथा आसला जतेबेले हमें पुओ झियो बहुत कथा कहबा खाली मु पुओ मानु सपोर्ट नोनी खाली झियो मानु सपोर्ट नोनी आमे गोटे झियो को देखले कि पुओ को देखले बहुत बड़ा देखाउ चल हमें कोन कले संग संग भाई सरला सेट कर दे मोर सेटिंग हवा आ किछि बाट ना एठी सेटिंग हेबे बा आबे घर ससार करबी आगु बढ़ीबी ओके माने तारो अपीयरेंस देखि कि ब्यूटीनेस देखि कि हमें कोन कले भासी गले ओके भासी गला परे कहला से जगह रे आमे किस दिन गला रहिले तापर टिके धोका तरकारी खाइले अलगा किछि भी खाइले तापर सरला जिंस से जगह सब कटि काटि गला तापर गोटे अलगा प्रकार माहौल आसी गला तो से जगह रे आमे कोन कहिबा ना कि आमे जो ब्यूटी वाइज कथा एज भाई मु कहिली कारण समस्त माने ब्यूटी देखि आमे भासी जिबा सब जगह रे माने गोटे लोक बाहर सुंदर हेत माने जे भीतर भी सुंदर हेतिबो तो सेटा से जगह हमर कोन होची कॉग्निटिव वाइज माने गोटे लोक हम सुंदर देखाला माने हां मु मानली जे हम से लोक बाहर भीतर बहुत बढ़िया लोक हेतिबो किंतु दुनिया रा रियलिटी ओके चलो ओके सब भासी गला ओके बुझिला बे तो हालो इफेक्ट कहिला माने तमे देखो ब्यूटी बायस बा कॉग्निटिव बायस ब्यूटी बायस ताको एत पई मु कहू छी कारण से जगह हमर कॉग्निटिव टा आज हमर अफेक्टिव से जगह अधिकटी एप्लीकेबल हो जाए कॉग्निटिव वाला जिंस पर से बायसनेस आ जाए से जगह रे तले एई प्रकार बायसनेस को हमें केमि चेक करबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट मेथड इज मोस्ट सस्पेक्टेबल टू द हालो इफेक्ट कौन हबा आंसर हमर कौन हबा आंसर फोर्थ चॉइस क्वेश्चनर नहीं बाबा माने फोर्थ चॉइस क्वेश्चनर हबो नहीं फोर्थ चॉइस क्वेश्चनर कौन फोर्थ चॉइस क्वेश्चनर कले त माने कौन बुझो ओके देन परफॉर्मेंस चेकलिस्ट रेटिंग स्केल ऑब्जेक्टिव गोटे बायसनेस को हमें केमि दूर करि परिबा बायसनेस कोडा हमर हबो बायसनेस पे हमर कोडा अधिक एलिजिबल मत कहला कोडा जल्दी चेकलिस्ट ऑब्जेक्टिव रेटिंग स्केल की फोर्थ चॉइस ऑप्शन डी टा हबा ने ए बी सी तीनटा भीतर कोडा को कोडा हबा रजते हम कहिले ऑप्शन ए टा ऑब्जेक्टिव टेस्ट ओके अमान्या बाग 4.0 अच्छा चलो कौन हबा आंसर ए की नहीं ए हबा नहीं ऑब्जेक्टिव टेस्ट नु अरे आंसर आसीगला ऑब्जेक्टिव टेस्ट नु हां मोस्ट सस्पेक्टेबल टू द हालो इफेक्ट जदि हमें कोन कहबा हमर रेटिंग स्केल जणो को रेटिंग दबा ओके एटा हमर कोन मोस्ट सस्पेक्टेबल टू द हालो इफेक्ट ओके चलो आगु बढ़िबा A teacher want to assess student ability to apply a complex problem solving in a strategy in a realistic context. Which assessment method would be most appropriate?
ए टीचर वांट टू असेस स्टूडेंट एबिलिटी ओके पिला मानकर एबिलिटी को से चेक करिया चाहउछथि अप्लाई ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इन ए रियलिस्टिक कंटेंट माने ताको नै तमे रियल वर्ल्ड रे कनेक्ट करी तमे जहां भी तमर करा छै आगो करि चलो ओके व्हिच असेसमेंट मेथड मल्टीपल चॉइस शॉर्ट आंसर परफॉर्मेंस टेस्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कोन अब आंसर वेरी गुड साबा जो माने मोर आंसर सी दो परफॉर्मेंस टेस्ट काहे कि ए जगह कहिला गोटे पिलार कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग कथा आसिला जगह रे ओके प्रॉब्लम सॉल्विंग कथा आसिला से भी कोउठी रियल वर्ल्ड रियलिस्टिक ताले आंसर मोर कोन हबो परफॉर्मेंस आगो बढ़िबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की लिमिटेशन ऑफ यूजिंग पोर्टफोलियो for large scale assessment which of the following is the key limitation of using portfolio for large scale assessment subjectivity in scoring and analysis difficulty in assessing growth over time inability to assess wide range of skill lack of student involvement in the assessment process कौन होगा आंसर पिला माने कौन हम आंसर हमारा डी 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 ओके चलो कहला बुझिबा आस कहला कि आंक भीतर केउटा गोटे की लिमिटेशन ऑफ यूजिंग पोर्टफोलियो पोर्टफोलियो रो कोटा गोटे की माने लिमिटेशन हबो आमे तो लार्ज स्केल ले यूज करूचंती फर्स्ट ऑप्शन कहला सब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग रे सब्जेक्टिविटी आसेटा गोटे हेई पारे देन कहला डिफिकल्टी इन असेसिंग ग्रोथ ओवर टाइम डिफिकल्टी आसीबार नाही से जगह इनएबिलिटी हबो नाही देन कहला लैक ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट इन असेसमेंट प्रोसेस लार्ज स्केल में लैक ऑफ कोन पई कहिबा लैक ऑफ स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट कोन पई हबो काहे कि तमे माने भाबुटा हबो बोली कोन पई एटा हेई परिबो पिला मानकर इन्वॉल्वमेंट लार्ज स्केल ले पुनी पोर्टफोलियो यूज करी एटा लैक कोन पई करबो काहे के लैक करबो मते टिके बुझाओ तम माने मते कोन पई ऑप्शन बी और सी हबो नै ए न कहे कि तमन पई आंसर काहे कि डी हैला कोन पई तमे कोन भाबी मते आंसर डी देला मते बुझाइलो तमे माने बुझाओ आज टिके जूम रे अछि कि बोर्ड नहीं तो नहीं तो जूम रे तो नहीं चलो देखिए कौन होउची चलो ए जगह बुझ पिला माने कहला की लिमिटेशन ऑफ यूजिंग पोर्टफोलियो इन लार्ज स्केल ए जगह हमर स्टूडेंट मानकर माने कोन इन्वॉल्वमेंट केबे लैक हबनी तमे जो भी स्केल ले यूज कर स्टूडेंट मानकर इन्वॉल्वमेंट जति रहया कते सेति के रहिबो ताले हमर आंसर कोन हबो सब्जेक्टिविटी इन स्कोरिंग एंड एनालिसिस स्कोरिंग और एनालिसिस रे टिके से जगह हमु कोन आसीबो असुविधा आसीबो ओके चलो ए स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट इज प्राइमरली डिजाइन्ड टू मेजर standardized achievement test is primarily designed to measure कौन पाई पिलांकर performance relative to large and representative group na individual student growth a student mastery of a specific classroom content student potential for future learning जल्दी को पिला माने 7:20 हेलानी कि एपन त हम 6 नंबर क्वेश्चन में बचंती जल्दी आंसर को कौन अब आंसर हमर यस वेरी गुड जो कहले हमर लार्ज ग्रुप स्टैंडर्ड असला में हमें कहबा लार्ज ग्रुप कौन ए जगह हमर हैला बोर्ड एग्जाम प्लस 2 एग्जाम जो एग्जाम गुडा हमर फ्लेक्सिबल नुह जो एग्जाम पे हमर एक्सपर्टीजिंग को दरकार पड़े से जगह हमें कौन कहले हमर स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट होजे ओले जगह रे ओके वेरी गुड आगु को बढ़िबा Which type of reliability is most relevant when ensuring that different rater score a student easy consistently? Which type of reliability is most relevant when ensuring that different raters score a student easy consistent easy students essay consistently? Test parallel inter-rater na internal consistency reliability कौन अब आंसर है जगह रे प्रीवियस क्लास रे मु तमन को इंटरेटर कथा कहि दिली मैम क्वेश्चन ऊपर कोन पळौ छी अच्छा पिला माने मु प्रीवियस क्लास रे इंटरेटर कथा बुझाई दिली मते जल्दी आंसर दियो ए क्वेश्चन मु बिल्कुल भी भूल चाहू नहीं ओके
टेस्ट टेस्ट जो माने कहूछ एसे देइची एसे रे हमें टेस्ट टेस्ट वाला पकई परिबा नहीं देन असला हमर पैरेलल फॉर्म देन असला इंटरेटर इंटरनल कंसिस्टेंसी तले आंसर हमर कोन हबो इंटरेटर माने मु जहा कहूची मोरा मो पाखरे आउजन टीचर बसन सी भी से जिंस रे मो कथा रे एग्री करूचंती कि हां मैम रे ठीक अछि आपण आगु को मारी चलंतो माने से जगह रे मोर जिंसटी ठीक अछि ओके आगु को बढ़िबा A teacher observes student working in a group and use a checklist to record specific social interaction skills. This is an example of a teacher observe. Or teacher observe करुचे student माननकु working in a group and use a checklist to record specific social interaction skills. Social interaction skill कथा कहउचे जगर पिला माने this is an example of product assessment, process focused assessment, summative and diagnostic. कोन होबे जगर रे teacher observe करूची working in a group use a checklist कौन होगा आंसर ओके चलो वेरी गुड कौन होगा आंसर हमर प्रोसेस बेस ओके प्रोडक्ट हैला माने ए सब जिंस हमर हैला पर जोटा गोटे मूल जिंस आसबे हमें कहले प्रोडक्ट समेटिव कहला माने एट द डायग्नोस्टिक कहला माने हम जेटा आइडेंटिफाई करछ पिला मानकर प्रॉब्लम ताले हमें जर कोन कहले प्रोसेस रे अछन हमें कोन कहबेडा प्रोसेस फोकस्ड असेसमेंट ए टेस्ट ब्लूप्रिंट प्राइमरीली इंश्योर ब्लूप्रिंट हमर प्राइमरीली कोन इंश्योर करे हाई रिलेबिलिटी ऑफ टेस्ट स्कोर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ द करिकुलम एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव एज ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग एंड स्पेस वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट कौन होगा आंसर हमारा ब्लूप्रिंट ब्लूप्रिंट हमू कौन करे गोटे ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर दिए हाँ कि नहीं पिला माने ब्लूप्रिंट कौन करे हमू गोटे करिकुलम एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव आगु बढ़िबा द जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी कहले हमें कौन बुझू जेडपीडी हमर केतले 𝐉𝐨𝐢𝐧 देइथिले जेडपीडी कहले हमें कौन बुझू जो गोटे गैप हमर फुलफिल हुए विथ गाइडेंस और विदाउट गाइडेंस जो गैप हमर फुलफिल हुए ताको हमें कहले जेडपीडी ओके डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इंडिपेंडेंटली कथा आसिला हमर हबने देन कहले डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली एंड विथ गाइडेंस ऑप्शन बी हमको जे एप्रोप्रिएट लागु ना नहीं पिला माने आगो बढ़िया कार्ल लोजर ह्यूमनिस्टिक थ्योरी एम्फसाइज कार्ल लोजर कर ह्यूमनिस्टिक थ्योरी आगे भीतर कोन टाकू एम्फसाइज करू अछि द अनकॉन्शियस ड्राइव एंड अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस द रोल ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुली इन शेपिंग बिहेवियर कथा कहला माने हमें का कथा कहिबा बिहेवियर शेपिंग कथा कहिला माने मु कहा कथा कहिबी बिहेवियर शेपिंग कथा कहला माने मु कहा कथा कहबी बिहेवियरिज्म में जेबी वर्सन कथा कहबी सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ देन कहला कॉग्निटिव स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट माने पियाजेट कथा आसिला हमर कोन हबो आंसर हमर कोन हबो आंसर हमर सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ की नुहा चलो आगु बढ़िबा इन रोजेरियन थेरापी अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कोन अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड रो परफेक्ट एग्जांपल कोन हबा आ जगह मत कहलो अप्रूविंग फॉर ऑल पर्सन बिहेवियर माने मु जनकर माने सब प्रकार फ्लॉस को एक्सेप्ट करके ताको आगु को मु नउची तू गवर्नमेंट चाकरी कर न कर मैम स्लो करंतु टिके अच्छा ठीक अछि चलो ठीक अछि माने तू गवर्नमेंट चाकरी कर न कर मु तते बा हेबी हा 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 आंसर पळे आछी भलो कथा लागुनी गुडाक ओके तू गवर्नमेंट चाकरी कर न कर मु तते बा हेबी जगह पॉजिटिव जिंस अछि किंतु ऑन कंडीशन कंडीशन से जगह रे कोन अप्लाई हो नाही अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड कोन अब आंसर हमर एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग पर्सन रिगार्डलेस ऑफ देयर बिहेवियर प्रोवाइडिंग पॉजिटिव रेनफोर्समेंट फॉर डिजायर्ड एक्शन कोन अब आंसर मोर जगह रे पिला माने ऑप्शन बी कि नुहा गो जानू का हमें तारो रिगार्ड बिहेवियर जा था ताको हमें बात कर ताको हमें कोन करबा एक्सेप्ट करबा चलो 𝐉𝐨𝐢𝐧 कांसेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग ना एटा कंफ्यूज बंदे जोड़ा हमर कहले कि हमें पाठ पढो कि न पढो आपण हम भल पाइबे हां भल पाइबी किंतु सेही भले आ रहइबनी तमे जदि एथर एलटीआर क्रैक न कल ना ताले मन मोर बहुत कष्ट हबो तो सेही हिसाब रे प्रिपरेशन चला ओके जदि माने न हैला ना मन पूरा मोर भांगी जीवो टेक्स्ट बुक रो ऊपर टैग टा कटुची माने जूम रे अछि बोर्ड मैम अच्छा ठीक अच्छी बाकी मु जानी तो पारुनी कौन हेची कौन नहीं
जूम रे तो नहीं ताको मु जते ये कला तो आसु नहीं तळु को ओके ओके सोनाली आज गोटे दिन एडजस्ट करिनियो देन आमे काली को ये कर दबा ओके चलो स्काफोल्डिंग कथा कहला माने जो जगह मोर ग्रेजुअली गोटे सपोर्ट कौन होची टेम्पररी सपोर्ट रिमूव हो जाउची ऑप्शन ए कि नो ग्रेजुअली विथड्रॉइंग सपोर्ट एज द लर्नर बिकम मोर कॉम्पिटेंट आगो बढ़िबा ओके ए की एडवांटेज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ओवर टीचर मेड टेस्ट की एडवांटेज कहार स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रो ओवर टीचर मेड टेस्ट कौन हवा आंसर greater alignment with specific classroom curriculum, flexibility, content and format, establish norm and psychometric properties, ease of administration and scoring by teachers. कौन अब आंसर पिला माने मोरा स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रो की कौन डा मोरा वेरी गुड हाँ हाँ नॉर्म्स एस्टाब्लिशिंग कौन नॉर्म्स कथा कहला माने आमे कहबा से जगह स्टैंडर्डाइज्ड हमर टिके अधिक भलो होची चलो आगो बढ़िबा टीचर मेड टेस्ट आर जनरली प्रिफर्ड व्हेन द प्राइमरी गोल इज टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस अक्रॉस डिफरेंट स्कूल असेस mastery of specific content taught in the classroom determine a student aptitude for future learning obtain a reliable measure of general intelligence कौन हबा आंसर हमर टीचर मेड टेस्ट इज जनरली प्रिफर्ड इन द प्राइमरी गोल जल्दी कौन डामर हवा बे compare student performance across different school assess mastery of specific content taught in classroom very good मो छुआ गोटे सब बढ़िया शाबाश खुशी कर दो मत एवं आंसर देखे आगो बढ़िया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ ए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट माने जो जगह आमको गोटे एक्सपर्ट को दरकार पड़ी थाए जड़े पूरा ज्ञानी मानी लोकंकर आमको आनी से जगह बसैकी तांकोठु आमे ज्ञान नहीं थाउ कौन हबो टीचर जजमेंट स्कोरिंग इज ऑफन सब्जेक्टिव बेस्ड ऑन टीचर जजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल कथा आइले जगह पिला माने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट रे टिके भाबी कहि देखिबो देन कहला कंटेंट इज डिटरमाइंड सोली कथा कहूजे जगह रे सोली कहिला सोली तो आमर गोटे कौन नेगेटिव टर्म आपको मुड़े देली देन कहला नॉर्म्स ए जगह नॉर्म्स टर्म्स एंड कंडीशंस आसिला माने मु कौन कहिबी स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट कि नुह आगो को मारी जिबा अरे अरे चलो ए पोटेंशियल लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इज देयर ए पोटेंशियल लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट is there lack of reliability due to varied administration condition potential for cultural bias and lack of relevance to local curricula then inability to assess higher order thinking skill difficulty in scoring objective potential limitation कौन है standardized test रे standardized test रे हमरो limitation कौन limitation टा कौन हबो 18 बी बड़ अछि चलो मु एथरा का कथा हमरो आरती नहीं अंकिता कथा मानिली एवं बी टाकू ही माइली कल्चरल बायसनेस वाला जिनस हमर आसी जाय कोथिरे हमर एथिरे पोटेंशियल फॉर कल्चरल बायस एंड लैक ऑफ रिलेवेंस टू लोकल करिकुला ए प्रकार जिनसटी हमर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आसी जाय आगो बढ़िबा टीचर में टेस्ट आर टिपिकली स्ट्रॉन्गर देन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट इन टर्म्स ऑफ टिपिकल टीचर में टेस्ट आर टिपिकली स्ट्रॉन्गर देन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट को टर्म रे अलाइनमेंट विथ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल goal then technical quality and psychometric properties generalizability of result to larger population objectivity in scoring कौन गिरे हबो पिला माने ये कोन मत एमिते एमिते लागिला कौन डाबा आंसर हमरो वेरी गुड शाबाश कौन अलाइनमेंट विथ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शनल गोल माने कौन इंस्ट्रक्शनल गोल टा से जगह 19 ओके चलो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन वेरी गुड ओहो हो आसीगला जो माने अपन बैच नहीं ना
कौन कर जाइए बैच टी परचेज करनी कहीं LTR एग्जाम मुंड उपर अल्प दिन ही रहा बेकार आड़े जाड़े बुलिक टाइम वेस्ट न करके बैच टी किण और पाठपढ़ा टी स्टार्ट करना से तुमको आर्ट्स PCM CBGET तीन टांकर कोर्स मिल जाऊँगी जोटा कि तुम बहुत ही हेल्पफुल हम नेब केमी कूपन कोड अप्लाई करने बिल्कुल ही भूल ना मुझे जगह किसी चित्र करदेली से चित्र जमा भी भल देखागलानी तो काटी भी देली ओके कूपन कोडा हूँ कौन EZSN ओके EZSN बाकी रहा आम सुपर पैक कथा एडे माने इे सियाड़े बाया न है गोटे कोर्स धर सुपर पैक जोटा तुम बहुत ही बढ़िया जहाँ जहाँ कोर्स आम आगु लंच जहाँ आगू लंच हाँ जाऊँ सब प्रकार तुम गोटे जगह मिल जाव ओके मिल जाव तो सही गोटे जगह ही पाठपढ़ा धर एवं आगू को बढ़ आउ जो जिनस जो कथा आम ए जगह अटकी गला नंदी घोष को आम बढ़ई पार कौटी आम टेलीग्राम चैनल जो मैंने जॉइन है ना जल्दी जॉइन हुआ PDF मिल जाव राति अधर आम राति अधरे ना 9टा बेले आम क्विज होची ओके तो आस जल्दी जॉइन हो जाओ ओके आउ आमर क्लास रिगार्डिंग इनफॉरमेशन पाई जॉइन कर टीचिंग बाय टेक्स्ट बुक चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर दियो CCE प्राइमरीली M2 CCE प्राइमरीली M2 जल्दी 7:30 हो गला पिला माने जल्दी आंसर दियो कौन इट्स RTEZMJ ठीक अच्छी चलो ओके को कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्राइमरीली एम टू रिड्यूस वर्कलोड टीचर मानकर वर्कलोड को रिड्यूस करिया को ना सोली कथा कहले एटा को मु काटी देली ऑप्शन बी को देनसला कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट अक्रॉस डिफरेंट स्कूल असेस ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट डेवलपमेंट ओवर टाइम सीसी कहला माने कोन ए जगह हम बुझुछु गोटे पिलार कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ओके कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन जो जगह रे कोन हमर होलिस्टिक डेवलपमेंट होची पिलार माने गोटे ऑल एस्पेक्ट गोटे पिलार सब प्रकार एस्पेक्ट को से जगह रे हम ताको कोन करछु असेस करछु डेवलप करछु एवं आगु को बढ़ुछु ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन द CCE कंटिन्यूअस रेफर टू CCE जो कंटिन्यूअस जो हमर C फॉर कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ए जो कंटिन्यूअस कहले हमें कोन बुझुछु इंटीग्रेटिंग असेसमेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंडक्टिंग असेसमेंट ओनली कहला जगह रे ओनली हबो नै ओनली डाको म काटि देली ऑप्शन डी भी देई जोटे ओनली ताको भी काटि देली ए और सी भीतर कोटा हबो को इंटीग्रेटिंग असेसमेंट विथ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यूजिंग द सेम असेसमेंट टूल रिपीटेडली थ्रू आउट द ईयर कोन हबो आंसर हमरो कोन हबो आंसर कौन हम आंसर हमारा ऑप्शन ए कि नुह इंटीग्रेटिंग असेसमेंट विथ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस आम असेसमेंट को ए जगह इंटीग्रेट करछु कोथरे हमर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे ओके देन इवैल्यूएशन इज अ ब्रॉडर टर्म देन असेसमेंट बिकॉज़ इट इन्वॉल्व इवैल्यूएशन टा हमर ब्रॉडर टर्म देन असेसमेंट कोन पाई collecting data on student performance using various tools, making judgment and decision based on their collected data, providing feedback to student improve their learning, measure specific learning outcome. कौन अब आंसर हमारा ओके 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 स्क्रीन टा थिला टिके ऊपर सेति पई अडुआ हेउची अछि क्लास टिके ओके एबे ठीक गेला पिला माने ओके चलो evaluation is a broader term than assessment because it involve evaluation is a broader term कौन पाई collecting data on student now all clear okay ठीक अछि इवैल्यूएशन हमर कोन है जजमेंट वाला जिंस आसे केते बेले असेसमेंट हम डाटा कलेक्ट करी के आनिबो सेते बेले हम जजमेंट वाला जिंस कोथरे आसीबो इवैल्यूएशन रे आसीबो Evaluation is a broader term than assessment. Okay, ठीक है चला. Option B is correct. आगो बढ़िया formative assessment is primarily used to formative assessment आसला माने जगह रे मो ongoing during वाला कथा कहबे at the end कहले माने मो कहबे summative struggling academic for remediation कथा आसिला माने मो कोन कहि मो diagnostic assessment की नुह पिला माने then आसिला comparison वाला कथा आसिला then monitoring student learning and provide feedback during instruction ताले जगह मोर ऑप्शन डी टा होछ ना नहीं आगो को बढ़िबा बोलाल तो खाली गार टाणी जाउची समेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड टू समेटिव असेसमेंट
समेटिव असेसमेंट इज कंडक्टेड टू कौन पाई गाइड करिया को ना स्नैपशॉट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट स्पेसिफिक पॉइंट ऑन टाइम ना डायग्नोज करिया को ना एनकरेज करिया को जदी मु कहबे जगह मोर ऑप्शन बी होउची ना नाही पिला माने वेरी गुड बी टा बड़ अछि ओके चलो तमन जहाँ बाबा तमन कथा स रखो पर आगो बढ़िबा व्हाइल मैच्योरेशन सेट द स्टेज ऑफ लर्निंग रेडीनेस इंडिकेट मैच्योरेशन सेट द स्टेज माने मैच्योरेशन हिट होउची आसी की मैच्योरेशन बाडेला आसी हमर कोडी स्टेज रे से जगह हम कौन कह रेडीनेस क्यों प्रकार भाव में होता रेडीनेस इंडिकेट द स्पीड एट व्हिच चाइल्ड रीच डेवलपमेंट माइलस्टोन whether a child has the necessary foundational skill for a specific learning task, the overall cognitive capacity of a learner, then the impact of early experience and later development. कौन अब आंसर करे पिला माने कौन अब आंसर मैम ओके चलो ठीक अच्छी कौन हम आंसर कौन हम आंसर हमर वेदर ए चाइल्ड हैज द नेसेसरी फाउंडेशनल स्किल फॉर ए स्पेसिफिक लर्निंग टास्क ना दैट ओवरऑल कॉग्निटिव एस्पेक्ट ना कौन डेटा हमर हबो ऑप्शन बी कि नुआ पिला माने एटा में कोन कहउचंती जे हमर मैच्योरेशन हिट हुए द चाइल्ड हैज द नेसेसरी फाउंडेशन स्किल मन ताको जते स्किल है नेसेसरी फाउंडेशन स्किल ताबाकू आसी जाई थाय से टाइम रे ओके चलो आगो बढ़िबा ए चाइल्ड मे बी बायोलॉजिकली मैच्योर एनफ टू लर्न टू रीड visual and motor skill development but the lack reading readiness if they have not developed sufficient phonological awareness, have not reached the typical age for reading instruction, are not interested in learning to read, attend a school with limited resource. कौन अब आंसर a child may be biological mature enough to learn to read गोटे पिलाटी बायोलॉजिकली माने मैच्योर हो जाइए लर्न रीड करने को से बायोलॉजिकली मैच्योर हो जाइए कौन विजुअल एंड मोटर स्किल डेवलपमेंट बट लैक रिगार्डिंग रेडीनेस इफ दे से कम रेडीनेस लैक करिवो केउंति पई हैव नॉट रीच द टिपिकल एज फॉर रीडिंग इंस्ट्रक्शन हम तो कहिला ए जगह कहि देलानी कि बायोलॉजिकली से तार आसी गलानी बोली बायोलॉजिकली से गोटे जिनस जगह पहुँची गलानी आमर तार एज भी से हिसाब से बढ़ी बढ़ी गलानी ता एज भी से जगह पहुँची गलानी जे कौन टिपिकल एज फॉर रीडिंग इंस्ट्रक्शन कौन हम आंसर आमर इंटरेस्टेड इन लर्निंग टू रीड एटा गोटे हेला लागुची देन कहला स्कूल विथ लिमिटेड रिसोर्स अटेंड ए स्कूल ओके ताले मु कौन कहबी ए जगह मोर ए जगह रे इंटरेस्ट नथिले रीड करवा इंटरेस्ट नथिले कौन रीड कर सी ठीक अच्छी इंटरेस्ट नथिले कौन रीड कर हाँ ये जगह आमको रेडीनेस बट लैक ऑफ रीडिंग रेडीनेस कथा भी यदि मुझे जगह मुझे कहि ठीक अच्छे ऑप्शन सी टा भी ठीक अच्छी कि जदि आम देखा हैव नॉट डेवलप सफिशिएंट फोनोलॉजिकल अवेयरनेस एटा भी गोटे हेला लागुचे ना नहीं पिला माने जदि ता पाखरे माने तार सफिशिएंट फोनोलॉजिकल अवेयरनेस से डेवलप हेई नथिबो ओके ताहाले भी हमर न हेई पारे ठीक अच्छी किंतु जेहेतु ए जगह आम कहीदेला बट लैक रीडिंग रेडीनेस ओके ए जगह आमर लॉ ऑफ रेडीनेस कथा आम पकेबा ताले कौन हम आंसर आमर गोटे पिलाटी क्लासरूम को आसिया पूर्व कौन से माने फिजिकली मेंटली बोथ आर प्रिपेयर हवा जरूरी ओके ताले जगह मोर ऑप्शन सी टा भी गोटे आडू हेला भलिया लागुची आगु बढ़िबा चलो द कांसेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड इन डेवलपमेंट इज मोस्टली क्लोजली रिलेटेड टू the concept of critical period in development is most closely related to learning readiness. Critical period most closely related to learning readiness as it highlight optimal time for acquiring specific skill. Environmental influence as it emphasize the impact of early experience na cognitive development as it focus बाकी ऑप्शन तुम पढ़ी नियो कौन कहला कांसेप्ट ऑफ क्रिटिकल पीरियड कथा कहला पिला माने जगह मु कौन कहिबी क्रिटिकल पीरियड कथा कहूची माने मोर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आडको मु गति करूची बोली कहबे नै कॉग्निटिव डेवलपमेंट आडको मोस्ट एप्रोप्रिएट ए लागुची कोउटा रे कौन हला ओके 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 जहाँ भी डाउट अच्छे आम गोटे स्टार मार्क कर रख आम बुझी ना मत एटा कह फर्स्ट ऑप्शन क्रिटिकल पीरियड डेवलपमेंट इज मोस्ट क्लोज रिलेटेड टू
एटा मोस्ट क्रिटिकल पीरियड टा हमर मोस्टली कहा सहित रिलेटेड लर्निंग रेडीनेस सहित ना एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस सहित ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट सहित ना मैच्योरेशन सहित कहा सहित जदि मु कहिबी कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैम 28 आउथर देखिबा लास्ट ठीक अछि मु जानिली सेहि पई कहली जे हमें लास्ट देखिया बोली जदि मु कहिबी क्रिटिकल पीरियड हमर का सो कनेक्टेड ओके हमर कोन कॉग्निटिव और डेवलपमेंट सहित चलो आगो बढ़िबा according to Piaget theory of cognitive development assimilation occur when a child चलो कौन हम आंसर हमर एटा तो स्पेसिफिक अच्छी हेबनी सी रे सर्कल कर देली कौनटा सी रे सर्कल कर देली इंटरेस्ट ठीक अछि हम बुझिबा कौन अछि ओके व्यस्त हबार नहीं सोनाली बुझिबा कौन अछि आर आंसर दियो कौन हबा अकॉर्डिंग टू पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एसिमिलेशन पिला माने टाइम मिलानी जल्दी ओके अकॉर्डिंग टू पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एसिमिलेशन माने कौन एडिंग नॉलेज ओके आउ कौन हमर न्यू नॉलेज प्लस एक्जिस्टिंग नॉलेज न्यू प्लस एक्जिस्टिंग नॉलेज देखिला जाय कोठी आसिला स्कीमा फिट न्यू इन्फॉर्मेशन चेंज एक्जिस्टिंग स्कीमा टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन और क्रिएट न्यू स्कीमा टू डील विथ न्यू ऑब्जेक्टिव सिचुएशन यूज एक्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विथ न्यू ऑब्जेक्टिव और सिचुएशन आसीबे बैलेंस बिटवीन बैलेंस आसी गला माने ए जगह रे मो कोन कहि मोर इक्विलिब्रियम कथा हो तले ऑप्शन डी रे त मोर हबो नै ए बी सी रो कोडा अब मते कुहो कोन डा आंसर हमर फिट न्यू ओके ठीक अछि चेंज देला जगह चेंज एन एक्जिस्टिंग स्कीमा टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन क्रिएट न्यू स्कीमा गोटे न्यू स्कीमा हमें से जगह क्रिएट कर दबा से जिनसटा पई ऑप्शन बी टा जगह हेला भला लागु नै ये पेन भी चालू नहीं ओके देन यूज एन एक्जिस्टिंग स्कीमा टू डील विथ न्यू ऑब्जेक्ट और सिचुएशन हमर से जो पुराना स्कीमा अछि सेही स्कीमा रे ही हमें दीटा नॉलेज को कले ताकू हमें एडजस्ट माने ताकू साइज कले ताले ऑप्शन सी टा नुह एटा कहिला कि हमें स्कीमा टाकू चेंज कर टोटली माने गोटे नुआ ड्राइव आनी पके दबा ई ड्राइव डी ड्राइव अछि काम ना जी ड्राइव आनी पके से जगह रे ओके चलो अकोमोडेशन आसला माने आगे मु कोन धरिबी आको चेंज अछि ए हबनी ओके असिमिलेशन होची ऐड करबा कहला कि किछ असुविधा अछि कि बुझिएला तो 30 टा बुझिएला ना बुझिएलानी चलो ए जगह देला अकोमोडेशन माने मॉडिफाई अकोमोडेशन आसिला माने मो मॉडिफिकेशन कथा कहबे एवं आगु को बढ़िबी आगु बढ़ी गले अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप ड्यूइंग ऑब्जेक्ट परमानेंस केते बेले ते हमर सेंसरी मोटर की नुहा पिला माने ऑब्जेक्ट परमानेंस ता हमर सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कहला हमर कोन लैक ऑफ लॉजिक एनिमिज्म टॉयज वाला तो हमें कहि परिबो से जगह रे देन आसिला हमर कंक्रीट ऑपरेशनल माने से जगह हमर इगोसेंट्रिज्म आसी माने डाइल्यूट हे जाई थाए ओके प्री ऑपरेशनल पिला मानकर इगोसेंट्रिज्म ता हमर कोन थे बहुत बढ़िया थाए माने आई मी माई सेल्फ वाला जिंस मु जोटा कहूची ठीक बाकी माने मो तमन सब मो कथा सुना से जगह हमर कोथरे एटा थाए प्री ऑपरेशनल ले किंतु कंक्रीट हमर डाइल्यूट हे जाय लैक ऑफ लॉजिक बोटे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हे फॉर्मल असला में कहबा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाला जिंस हमर फॉर्मल ले आ जाय थाए ऑब्जेक्ट परमानेंस कहला माने हमें कहबा सेंसरी मोटर आगु बढ़िबा इगोसेंट्रिज्म द इनएबिलिटी टू सी थिंग फ्रॉम अनदर पर्सन पर्सपेक्टिव माने मु गोटे अन्य लोकर पर्सपेक्टिव से जहा कहूची मोर बुझिया को एबल नुवा मु बुझी पारिबी नाही तमे जहा कहूजो को से जगह मोर कोन अब एबे ही कहली इगोसेंट्रिज्म ता हमर कोठी जाय प्री ऑपरेशन के नुहा डाइल्यूट कोथ रह जाय थाए हमर कंक्रीट ऑपरेशन हमर कोन डाइल्यूट हे जाय थाए इगोसेंट्रिज्म ता ओके चलो when learning is viewed primarily as an outcome okay the focus is mainly on हमर लर्निंग ता मेनली हमें ताको गोटे आउटकम बा प्रोडक्ट भाबे देखुचू सेते बेला हमर मेनली कोन होउची द लर्नर मोटिवेशन एंड द फोकस इज मेनली ऑन द लर्नर्स मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट द ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल रिजल्ट ऑफ लर्निंग द सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट कौन अब आंसर सी आसिला द सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट पिला माने ए जगह रे प्रोडक्ट कथा कहला मत माने गोटे सत्य कथा कुआ
एकदम मनु जोटा सेटा कहबो एबे तमनकर आगु को एलटीआर एग्जाम अछि ओके एबे तमनकर आगु एलटीआर एग्जाम अछि एलटीआर एग्जाम रे तमे सोशल और इमोशनली पाठ पढुछो ना कॉग्निटिवली मेंटली तमे पाठ पढुछो सोशली इमोशनल तमे पाठ पढुछो ना केमिति पाठ पढुछो ओके तो ऑप्शन सेटा मते जगह हेला भले लागु नै सोशल एंड इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ द लर्निंग एनवायरनमेंट हां सोशली इमोशनल तमको से जगह सपोर्ट आसले तमे पाठ पढाटा को आगु को बढ़ेइबो देन कहला द ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल रिजल्ट ऑफ लर्निंग then learners motivation and interest the different learning style the learning viewed as primarily as an outcome जेते तमाने गोटे रिजल्ट पाई जो तुमे एलटीआर पाई गलो गोटे हाई स्कूल टीचर हेई गलो सेटा गोटे कोन तमर ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल रिजल्ट की नुह से जिंसटी हमें ऑब्जर्व करे है भाई चाकरी पाई गला पिलाटी पढुतिला से चाकरी पाई गला ओके वेरी गुड इवनिंग शुभस्मिता ताले हम ऑप्शन कोन हबो हमर ऑप्शन बी टा जगह हबो कि नै आउटकम हमर कोनटा फोकस करे कौन हम ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल रिजल्ट रिजल्ट कौन आउटकम प्रोडक्ट बुझियला चलो आगो बढ़िबा इफेक्टिव टीचिंग रिकॉग्नाइज दैट लर्निंग इज बोथ ए प्रोसेस एंड एन आउटकम इफेक्टिव टीचिंग रिकॉग्नाइज दैट लर्निंग इज ए बोथ प्रोसेस एंड एन आउटकम बाय एम्फसाइजिंग एक्टिव लर्निंग स्ट्रेटजी व्हाइल आल्सो असेसिंग लर्निंग आउटकम सोली कथा कहला जगह सोली तो हबो नै बिल्कुल then primarily addressing the emotional need of the learner standardizing instructional method for all students effective teaching recognize that learning is both process and an outcome कौन अब आंसर हमर अंकित कहले हमर एटा बड़ अछि बोली एटा हबो आंसर चलो मु तम कथा रे भी आज सहमति तम कथा रे मु एटा माइली किंतु भूलले तमर भूलले मोर नुआ ओके अंकित आज रेस्पोंसिबल नेले एटा जदी भूले तले अंकित भूल करले सेत में भूलला देखो कहिले इफेक्टिव टीचिंग हमर केतले रिकॉग्नाइज करबे लर्निंग रिकॉग्नाइज करछि लर्निंग एज ए बोथ प्रोसेस और आउटकम emphasizing active learning strategy while also assessing learning outcome process माने धइला कोन हमर active learning strategy outcome माने कोन गोटे रिजल्ट आसी करा से जगह रे परफेक्ट वाला ठीक अछि आगु बढ़िबा an assessment that focus on observing student problem solving step and providing feedback कौन अब आंसर हमर कोथरे गोटे पिला को ऑब्जर्व करू चूज ऑब्जर्व स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक ऑन देयर स्ट्रेटजीज एम्फसाइज लर्निंग एज प्रोडक्ट आउटकम प्रोसेस रिजल्ट कौन हबो पिलाटी को हम ऑब्जर्व करूचू ऑब्जर्व करते कोन करचू फीडबैक प्रोवाइड करूचू ताल से जगह मोर कोन हो जे एटा गोटे प्रोसेस की नुह मु ऑब्जर्व करछु माने से गोटे काम कला बे प्रोसेस बेले जिंसटी हमर होउची माँ रोसे कला बेले तमे बसिक देखुछ माँ आउ टिके लुण पका आउ टिके चीनी पका आउ टिके मिठा कर टिके खट्टा कर वाला जो जिंस ओके फीडबैक दोछ तो प्रोसेस वाला जिंस आगो बढ़ले स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टिपिकली फोकस मोर ऑन लर्निंग इज और अन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टिपिकली फोकस मोर ऑन लर्निंग ओके आज एन इन्वॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग an individual construction of knowledge a measurable outcome na and collaborative activity कौन हमर standardized test typically occur more on learning कौन हमर काहा ऊपर हमर ये करूची प्रोडक्ट ऊपर की नुह standardized test हमर मोर काहा ऊपर डिपेंड करे प्रोडक्ट ऊपर की नुहे मेजरेबल आउटकम की नुह स्टैंडर्डाइज्ड हमर कोन मेजरेबल आउटकम ऊपर फोकस कर इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज फोकस करू नहीं देन आसिला हमर कोन इन्वॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग देखियार नहीं तमे पाठ पढ न पढ तमे बुझो न बुझो एग्जाम दियो आगु बढ़ मते किछि फरक पडुनी देन कला कोलैबोरेटिव एक्टिविटी कोलैबोरेशन तमे एग्जाम दे तमरो संग साथी मेली दे आसीबे एग्जाम दब दियो एक आसी के एग्जाम देले भी मु खुशी ओके देन आमर आंसर कौन हम ऑप्शन सी कि नुह आगु को बढ़िबा इन ए टीचर सेंट्रिक क्लासरूम द प्राइमरी फोकस इज ऑन टीचर सेंट्रिक क्लासरूम रे प्राइमरी फोकस कौन थाए फैसिलिटेटिंग टीचर सेंट्रिक क्लासरूम रे हमर फैसिलिटेटिंग गोटे प्राइमरी फोकस न थाए टीचर सेंट्रिक कथा हमर आस जीवा माने टीचर डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्ट लर्निंग ऑप्शन बीटा हमको बहुत ही एप्रोप्रिएट लागुची आगु को बढ़िबा बाकी कोलैबोरेशन आसी गला इंडिविजुअल नीड आसी गला बाकी सब हम कोथरे पड़ेबा लर्नर सेंट्रिक रे पड़ेबा चलो A learning centric approach emphasize creating an environment that support active student engagement एटा जाडा लागुची बाकी अपन देख स्ट्रिक्ट आसी गला जगह रे हबो नै देन कला टीचर्स एक्सपर्टीज छाड़ी दियो स्टैंडर्डाइज असेसमेंट हबो भी नाही ताले मोर कोन हबो ऑप्शन ए टा हबो कि नाही पिला माने
ऑप्शन ए टा मोर जगह करेक्ट हबो कि नहीं क्रिएट एन एनवायरनमेंट जो जगह रे एक्टिव स्टूडेंट एंगेजमेंट रहिबा ए लर्नर सेंट्रिक अप्रोच प्रायोरिटाइज लर्नर सेंट्रिक अप्रोच कहा को प्रायोरिटाइज करूची कवरिंग ए प्री डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ कंटेंट विद इन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम अडैप्टिंग इंस्ट्रक्शन टू द डाइवर्स नीड कथा आसला जगह टिके नजर पकेबा इंटरेस्ट एंड लर्निंग स्टाइल ऑफ इंडिविजुअल स्टूडेंट ओके ठीक अछि देन कला मेंटेनिंग क्लासरूम डिसिप्लिन एंड ऑर्डर यूजिंग यूनिफॉर्म टीचिंग मेथड टू एंश्योर इक्विटी वेरी गुड कौन हम आंसर हमर ऑप्शन बी चलो आगो बढ़िबा Which of the following classroom activity most indicative of a learner centric approach आंका भीतर केउ classroom टे most indicative को मानन को पई learner centric approach is student working on project based on their interest with teacher guidance ठीक अछि teacher lecturing student note नेबे हबने दिन कला all student complete same worksheet same time रे दबा छाडी दियो the teacher leading the whole class यदि मु कहबे जगह मोर ऑप्शन ए टा appropriate होउची ना नाही मोर पिला माने वेरी गुड चल आगो बढ़िबा कहला ए की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग सेंट्रिक एनवायरनमेंट रे की कैरेक्टरिस्टिक्स कोन लर्निंग सेंट्रिक एनवायरनमेंट रो की कैरेक्टरिस्टिक्स कोन पासिव आसिला मु काटी देली काहे की ओडे नेगेटिव टर्म रोट मेमोराइजेशन रिकॉल आसिला बे ताकू भी मु काटी देली काहे की ओडे नेगेटिव टर्म देन आसला अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट एक्टिवली कंस्ट्रक्ट मीनिंग एटा ओडे हला लागुची बाकी कहला यूनिफॉर्म पेसिंग एंड इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी फॉर ऑल लर्नर यूनिफॉर्म पेसिंग एटा हमर हबो नाही तले हमर आंसर कोन हबो ऑप्शन सी हबो करेक्ट आगु बढ़िबा प्राइमरी पर्पस ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम रो प्राइमरी पर्पस कोन टीएलएम रो प्राइमरी पर्पस कोन पिला माने रिड्यूस द टीचर्स वर्कलोड ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन टीचर मानकर वर्कलोड कमेबा मेक लर्निंग मोर एंगेजिंग कॉन्क्रीट एंड एक्सेसिबल टू स्टूडेंट एटा ओडे हला लागुची ओफ okay then standardize the delivery curriculum content as a student understanding through visual aids okay एटा ओटे हम कहबे जे ऑप्शन डी टा भी हमो कोन ओटे appropriate class as a student understanding through visual aid किंतु प्राइमरी पर्पस कोन प्राइमरी पर्पस कहला हम कोन कहिबा प्राइमरी पर्पस कहला हम कोन कहिबा वेरी गुड शाबाश जो माने मोर एंगेजिंग अरे जो माने मोर आंसर एंगेजिंग दोउचो शाबाश काहे कि हमर प्राइमरी पर्पस होजी कोन एंगेजिंग कॉन्क्रीट एंड एक्सेसिबल टू स्टूडेंट चलो आगो बढ़िबा इंक्लूसिव एजुकेशन प्राइमरीली एम टू इंक्लूसिव एजुकेशन प्राइमरीली काहो एम करूची इंटीग्रेट ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंस into mainstream classroom provide separate educational setting for a student with disability focus on specific learning need focus करछि कहा पर specific learning need ऊपर with student with special need then कहला gifted and talented student offer specialization को माने gifted और talented पिला मानन का पई ताले मु कोन कहबे जगह मोर कोन अब integrate all student regardless on their difference to mainstream classroom कौन हम आंसर जगह वेरी गुड शाबाश ऑप्शन ए जगह हम कि नहीं इंटीग्रेट ऑल स्टूडेंट रिगार्डलेस ऑफ देयर डिफरेंस इनटू मेन स्ट्रीम क्लासरूम in which step in test construction directly follow the definition of learning objective आंको भीतर केउटा गोटे डायरेक्ट काहा को फॉलो करूची definition of learning objective writing test item developing the test blueprint administering the test scoring the response कौन होगा आंसर blueprint okay very good okay very good developing blueprint ही आमर फर्स्ट प्लानिंग स्टेज रे ही आसी जाए जरा मैं किछि टेस्ट प्रिपरेशन कथा को जहाँ भी को आमर प्लानिंग स्टेज रे ही ब्लूप्रिंट ता पड़ी आसे डेवलपमेंट ऑफ टेस्ट ब्लूप्रिंट आगो बढ़िबा टेबल स्पेसिफिकेशन इज कंस्ट्रक्ट इज सिनोनिमस विथ टेबल स्पेसिफिकेशन कहले हमें कौन बुझु स्कोरिंग की टेस्ट ब्लूप्रिंट डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स डिफिकल्टी इंडेक्स कौन हवा आंसर हमरो ब्लूप्रिंट प्लानिंग थिले भी हेई थांता प्लानिंग रे सब हुए
C. Very good. Test blueprint. Okay. Which of the following assessment tool is least likely to provide detailed qualitative feedback on student understanding? Which of the following assessment tool is least likely to provide detailed qualitative feedback on student understanding? कौन होगा आंसर हमारा? Anecdotal record, observation checklist with open-ended comment, selected response item na review, interview protocols. Least likely to provide qualitative feedback. Qualitative feedback कथा कहला जगह रे qualitative feedback कौन होगा आंसर? MCQ very good शाबाश ए जगह हमर qualitative feedback आसीबो नै quantitative कथा कहला हां ठीक अछि आगु को बढ़िबा कहला the primary purpose of pre testing or pilot testing a test is to pre testing or pilot testing कहला माने कोन बुझो में pilot testing कहिले जेमिति हमर मेंस पूर्व प्रीलिम होउची से प्रकार जिनस ओके द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्री टेस्टिंग और पायलट टेस्टिंग is testing a test is to obtain feedback on clarity of instruction, estimate the average score of target group, identify and eliminate problematic test item, determine the appropriate time limit for the test. कौन होगा आंसर? C. Identify and eliminate. Very good. आइडेंटिफाई करबा एलिमिनेट कर दबा जो गुडा हमर एम्बिग्यूटी सृष्टि करथबो कंफ्यूजन सृष्टि करथबो किछि प्रकार जिंस हमर होउथिबो ताको हम कोन करले एलिमिनेट कर देले आ जदी भी किछि ताको हम आइडेंटिफाई कर देले ओके चलो ए टेस्ट इज कंसिस्टेंस कथा असला जगर पिला माने consistently held the same score upon repeated administration but doesn't measure the intent construction. कौन हबा आंसर हमर जगह रे दियो ए क्वेश्चन आंसर टे मते कुह कौन हबा ए टेस्ट दैट कंसिस्टेंटली held the same score. ओके माने को टेस्ट को मु बार बार कला परे भी मते सेम स्कोर आसुची ओके रिपीटेड एडमिशन बट डजंट मेजर द इंटेंट कंस्ट्रक्ट. कौन हबा आंसर हमर रिलायबल वैलिड 49A कहिले सोनाली मे भी काली आमे ए क्वेश्चन टा करिथिले मते जेति मने पड़छ काली में भी आमे ए क्वेश्चन ओडा करिथिले कोन टेस्ट इज वैलिड नॉट रिलायबल नॉट वैलिड वाला थिला बोथ नतला आउट कोन ऑप्शन था लास्ट थिला ऑल ऑफ द अबव थिला कुहो आबे तो मते आंसर कोन हबो एई प्रकार क्वेश्चन को आमे करिथिले ए जगह रे फास्ट हमो कहिला कंसिस्टेंटली गोटे टेस्ट को मु बार बार करूची मते सेम स्कोर आउची माने रिलायबल ओके रिलायबल किंतु बट डजंट मेजर द इंटेंट कथा आसिला माने मु कोन कहिबी वैलिड को मु ए साइड रे लिखिली साइड रे कोन दिजी बट डजंट ए भगवान बट डजंट मेजर द इंटेंट ओके वैलिड को ए जगह से वैलिड हो जंता को से मापी पारु नाही तले मोर कोन हबो रिलायबल बट नॉट वैलिड काली मु बुझै दिली गोटे टेस्ट में बार बार करू जंते सेम स्कोर आसिला परे हमें कहबो एटा वैलिड हबो बोली ओके यस क्वेश्चन डिफरेंट अछि रिलायबल बट नॉट वैलिड. चलो आगो बढ़िबा कंटेंट वैलिडिटी इज बेस्ड एंश्योर्ड बाय कंटेंट वैलिडिटी is based ensured by not interested अच्छी सोए ठीक अच्छी असुविधा नहीं चलो को आंसर कौन हबो admission the test to a large diverse sample correlating test score with another established test developing the test based on a well defined blueprint and curriculum using subjective scoring rubric. कौन हबो आंसर ए जगह रे मोर लास्ट क्वेश्चन सी शाबाश वेरी गुड कौन हमरो डेवलपिंग द टेस्ट बेस्ड ऑन वेल डिफाइंड कौन ब्लूप्रिंट एंड करिकुलम ओके चलो आज क्लास तो एतिक थिला क्लास टू एंड करिया पूर्व से सेम जिंस एपन जो माने जॉइन हेई ना हो जल्दी जॉइन हेई जा पेड बैच रे काई तो तमन रीजन जानि तो तमनगर एलटीआर मुंडो ऊपर तो बेकार टाइम वेस्ट न करी की
जल्दी जाई जॉइन हो जाओ जॉइन होगा कूपन कोड अप्लाई करिया को बिल्कुल भी भूलिबो नहीं कूपन कोड होची 𝐸𝐳 बाकी आ पर जिंस तमान पे बहुत इंपोर्टेंट जोटा कि हमर सुपर पैक कथा याडे साडे बुली की टाइम वेस्ट करियाठू एटा गोटे कोर्स एटा गोटे कोर्स किनी कि काहे पैसा खर्च करिवो न करिके गोटिए धर सुपर पैक ओके जो तुम मानू जहाँ जहाँ भी कोर्स आगुर सब लॉन्च जी एग्जाम आसी जहाँ भी सब कोर्स लॉन्च होती सब प्रकार तुम माने कौन क्लासेस टेस्ट मॉक टेस्ट सब प्रकार मिल जाव बाकी आगु जहाँ लॉन्च होगा जाऊँगी सेटा भी तुम क्लासेस देखी पार तो फायदामंद जिनसटा ओके तो धर क्या आमर पलई गला धरधर से उड़ी गला क्या आमर सुपर पैक को ओके कोर्स एक बैच अनेक बाकी जदि मु कहबी कौन आमर टेलीग्राम चैनल कथा जल्दी जाई जॉइन हो जाओ कहीं से जगार राति 9टा पर क्विज आ राति अधरे कह राति 9टा पर क्विज सेसन होती तुम जहाँ भी डाउट अच्छे से जगह क्लीयर कर व्हाट्सएप लिंक भी मुझे जगह पिन कर रखी जो मैंने जॉइन होगा चाहते जल्दी जॉइन हो तुमने से जगह ग्रुप रे ऐड हो कि मतलब पर्सनाली भी तुमने मत मेसेज कर किसी भी असुविधा ना ओके बाकी क्लास रिगार्डिंग इनफॉरमेशन जॉइन कोर्स टीचिंग बाय टेक्स्ट बुक पीडीएफ मो सहित कनेक्ट रही सब प्रकार जिनस क्विज कौन आमर पेडागोजी बाय सुभास्मिता मैम 24/7 ए जगह मु तुम अवेलेबल अच्छी ओके सुपर पैक पड़ेगा मैम हाँ मुझे पुणी टाणी आनी कुआडे जीव तुम तो नहीं आसी ओके किछि पिला व्हाट्सएप ग्रुप रो नंबर नहीं मेसेज देउचंदी सजेस्ट करंतु एमिते न करिया को पिला माने एई सब प्रकार यात्रा करिया बिल्कुल भूल कथा जमा भी ठीक कथा ना एगुड़ाक ओके आ जो माने भी एमिते करूच मु बिल्कुल भी से माने से बड़ा पिला पसंद करेनी एमितिका जिनस बिल्कुल भी कर ना ग्रुपटा खोला होती किछिटा नॉलेज शेयर होगा तुम मानकर ही बेटरमेंट पाई आ तुम ये यात्रा कर ग्रुपटी को बंद करदेवी सीधा सब जिन शेष करदेवी ओके तो जमा भी यहाँ आम किए कही उमाकांत सेनापति जमा भी सेमती नंबर फंबर नहीं क्या मेसेज मेसेज कर ना ओके यहाँ मोर वार्निंग टाइप तुम धर मेसेज मेसेज क्या भी कर ना ठीक अच्छे चलो बाकी जब आउ थे तुमको मेसेज जाए ताले मत उमाकांत मत जन पर्सनाली ठीक अच्छे स्क्रीन रे पशि भाई मो हाथ में पड़े तो मो स्क्रीन रे पशि पिटी एमती बिल्कुल भी कर पिटबी तो एत भल पिला गुड़ाक मोर समस्ते ठीक अच्छे चलो क्लास टी एंड करिया पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे नुआ थ्योरी थ्योरी तो नहीं एमसीक्यू सहित ओके आउ ए टाइम नहीं आम थ्योरी बसिक पढ़ाई ए जिते प्रकार तुम एमसीक्यू कर मोक कर जिते क्वेश्चन कर तुम से भल ओके चलो क्लास टी एंड कली पुणी देखा नेक्स्ट क्लास रे धन्यवाद गुड नाइट एवरीवन चलो एंड कली बाय।